Hi guys, what's up and welcome back to my channel. In past few videos of mine, I've been talking about Instagram, growth on Instagram and how to basically grow on Instagram. So I also talked about Reels and how they are great for people who are starting from literally zero or even when people have less followers, because Instagram's algorithm for Reels is great because they give you such great traction and reach and good amount of followers. So in this video, I'm gonna show you how I film my own reels, and I'm also be going to show you how I edit them on my mobile phone, which is always the fun part. So let's get started. So guys, I am ready for my first reel. This is how I usually start filming my reels or videos, especially when I'm doing some transition, some fun element which I try to bring in my reels. And I have my setup ready. Of course, a fake plant and a chair. And let's see, hum kya karne wale hain. So as you can see, I am not ready. I mean, I am looking okay, but I'm not ready. Like no makeup, no fancy clothes, just basic ghar ke kapde, because that's what I want to show, like before and after wala through our transition in reel. So that's what we're going to do today. So kuch reels mein I don't use a lot of movement, so I take help of a tripod. So you can use a mini tripod like this one or a big tripod, always in handy. So हमने before वाला ले लिया है, in which I'm dressing like this. Also to make it smooth, I am a bit psycho when it comes to my transitions. I want them as smooth as possible. तो मुझे चाहिए कि जो मैं बाद वाला पार्ट लूँ वो सेम उसी जगह पे हो जहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ. तो मैंने अपना पैर मार्क कर लिया है ऐसे छोटे से एक स्टिकर के साथ, एंड यहीं पे मुझे आके दोबारा अपना टो रखना है. दिस इज़ जस्ट अ टो हैपनिंग. So guys, after shooting मेरा before वाला part जिसमें I'm dressed normally, I took some time, got ready, did my makeup, dressed very nicely, and then I shot my after वाला part उसी same जगह पे बैठ के. So basically what I'm trying to do is I'm trying to do before and after वाला thing, and उसके बीच में I'll put a transition तो वो एकदम दिखेगा okay, like in a click she changed, if that makes any sense. And then comes the editing part, my favorite part. Okay, so I'm going to be doing everything on my mobile phone. Of course, you can use any phone like Android or iPhone, दोनों में ये वाली app है. And the app which I'm going to be using today is InShot. I'll be linking that app's link in description box down below. सबसे ऊपर you will find it, so don't worry. So I'm just gonna open it, and this is how it looks like. I'm just gonna import my 2 clips, before and after वाली. Okay, that is it, easy peasy. Okay, so यहाँ पे I'm doing so much पहले, तो मुझे वो कट करना है, तो I'm gonna split the video probably यहाँ से. So here's the split tool. I'm just gonna click on it, and इसने मेरी क्लिप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. तो जो वो पहला वाला पार्ट है उस पर क्लिक करके I'm just gonna delete it. Simple. तो ऐसा लग रहा है कि मेरी वीडियो अब यहीं से स्टार्ट हो रही है. Okay, I'm walking, I'm sitting. ओके, यहाँ पे ट्रांजिशन आने वाला है जब मैंने अपना लेग रेज किया है, तो वो देखना पड़ेगा. आई गेस दिस इज़ ओके. यहाँ पे मैं दोबारा एक स्प्लिट ऑप्शन देने वाली हूँ, एंड अगेन मेरी क्लिप एक और पार्ट में डिवाइड हो गई है. एंड जो ये वाला पार्ट है ये मुझे नहीं चाहिए, तो आई एम जस्ट गोना डिलीट इट. एंड यहाँ पे आएगा मेरा सेकेंड आफ्टर वाला थिंग कि ओके, पैर रेज होते ही आई एम चेंज्ड, बट उसको भी हमें एडजस्ट करना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, जो सेकेंड वाली क्लिप है, I'm gonna give it a split here maybe. थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा देखना, because this is going to be making a lot of difference. So I'm gonna give a slit here, and जो ये बीच में छोटा सा पार्ट है इसको मैं डिलीट करने वाली हूँ. एंड विल सी कि अब कैसा आ रहा है. तो अब हम इसे देखेंगे कि वो कैसा लग रहा है. तो थोड़ा सा पीछे करके आई एम जस्ट गोना प्ले इट. सी कितना क्लीन लग रहा है. सो आई गेस दिस इज़ फाइन. ओके, मैं स्टार्टिंग से दिखाती हूँ. मैं आई कूल, ये डन, बट दिस इज़ नॉट इट.
जो ये बीच में ये चेंज आया है ना यहाँ पे, आई वॉन्ट टू गिव सम ट्रांजिशन. आई मीन आई नो कि जो ये वाला थिंग इज हैपनिंग, दिस इज अ ट्रांजिशन इन इट सेल्फ, बट टू मेक इट इवन मोर कूल आई एम गोना प्ले विद अदर transitions which is available in this app. Okay, so go on filter, go on effect. Okay, so it has both paid and free effects, and I always choose free ones because why not? Okay, so you can choose any. Oh, I like RGB one, and इसका तुम effect कम ज़्यादा भी कर सकते हो. I guess this much is fine. Right click. एंड उसके ऊपर यू कैन एडजस्ट कि तुम्हें कहाँ चाहिए. ओके, सो आई नीड वेरी टीनी टाइनी अमाउंट बिकॉज इन अ क्लिक इट्स चेंजिंग एंड आई डोंट वांट कि वो पूरी क्लिप पे आए. सो बहुत ही क्विक करना पड़ेगा. गिव इट सम टाइम, बहुत ही ध्यान से हो जाएगा. ओके, सो आई वांट इट. ठीक है, ये सही आ रहा है बट ये बहुत बड़ा है, तो क्या कर सकते हैं, यू कैन स्प्लिट इट अगेन एंड इसको डिलीट कर दो. डन. So easy, looks so nice. Yes. Also guys, पीछे बहुत ज़्यादा background noise है, तो उसको हटाने के लिए just tap on the clip and go on volume and just decrease it completely. And similarly on the second clip as well. That's it. Now the voice is removed. Okay, so this app has a lot of music options, but I always love using music from Instagram because उसमें copyright वगैरह का कोई issue नहीं आता. वो Instagram का खुद के ही app में available है, so that makes the whole work a lot more easier. And I'm just gonna click on right and I'm just gonna export it. जो ऊपर question mark के right hand side पे एक लोगो है, I'm just gonna click on that and I'm just gonna save it, and ये automatically high quality में आपकी वीडियो सेव कर देता है, तो you do not need to have to worry about anything. Alright guys, so after this I love applying some really cool filters. Okay, so this app has some filters but those are very less, and for filters I always love using Snow app even for my photos and for videos. So I'm just gonna open this one, and जो हमने InShot से वीडियो सेव की थी वो हम यहाँ पे import करने वाले हैं. And this is how it looks like. I'm just gonna go on filters, and it has so many effects and filters going on, but I do not want to do a lot, because I do not want to change everything. Just I want to lift up a little bit of mood and थोड़ा सा background color को हम थोड़ा enhance करने की try करेंगे. That is it. Not too much, just a little bit. So let's see कि क्या होता है. Okay, so I personally love using Trend, and Trend के अंदर we have 3 options, ST1, 2 and 3, and my personal favorite is ST1. And obviously this is too much, तो हम try करेंगे कि कम से कम रखे. Probably 15 से 20 के बीच में is fine, and I'm just gonna save it. That's it. We're done. Friends since 1995. Growing up, same street, you, me, my ride or die. Okay guys, so now let me show you how you can upload your reels on Instagram and how to add music as well. Instagram में ही. Okay, so open Instagram. Top left corner पे there's this camera icon. Click on that. You have 3 options: live, story and reels. Click on reels, and लेफ्ट में ना छोटा सा गैलरी ऑप्शन है. क्लिक देयर एंड अपलोड द रील विच यू जस्ट एडिटेड. दिस इज इट. क्लिक ऑन राइट, एंड लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर ऑडियो ऑप्शन है. क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन चूज एनी म्यूजिक अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. यू कैन इवन सर्च फॉर सम रियली कूल म्यूजिक, और इट ऑलरेडी हैज़ so many options for you guys. You can even browse them. You can use English songs, Punjabi songs, like there are so many options for you to try. And after that just click on write. Again write. You can choose some cool cover from your video. Click on done. Write some really cool caption. I'm writing, hey, I just made this. And it also gives you an option if you want to share it on your feed or not. वरना रील्स का एक अलग से ऑप्शन बना होता है तुम्हारी फीड पे, वरना ये सिर्फ वहीं पे अपलोड होगी. बट लेटर यू कैन ऑल्सो एड इट ऑन योर फीड. ऑप्शंस में जाके तुम वो बाद में भी चेंज कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट शेयर इट ऑन योर इंस्टाग्राम एंड यू आर डन. So guys, that is it for today's video.
try making your reels using these little tricks and hacks which I showed you, and I promise you're gonna get many great followers, because I tell you, Instagram's algorithm for reel is amazing. I don't know why I keep repeating this, but this is actually true, because I am also seeing the results and I'm also getting traction from reels. So yeah, I really hope that you also grow in the same way, and yeah, do subscribe to my channel before leaving, because I keep making these tutorials and hacks and so many other cool stuff on my channel. And like this video if you enjoyed watching this, and I'll see you in my next one. Bye.